Good morning kids, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. So first we start with prayer. Join your hands, close your eyes. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Tasmai Shri Guruve Namah. Tasmai Shri Guruve Namah. Now rub your hands, put them on your eyes, open your eyes, and now you feel fresh. Okay. My name is Sachi Ravada from New Era Global School. So first start with our activity, our fine motor skill activity. So this is our activity board. So shall we start? So this is our activity board and this is push pin. So how we hold push pin? We hold push pin like this. How we hold push pin? We hold push pin like this. So shall we start? So first of all, we push pin in a line. हमें क्या करना है? मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है और वहाँ पे हमें पिन को पुश करना है. क्या करना है? पुश. नाउ वी टेक अनदर पिन. We take another pin and how we hold? हमें कैसे होल्ड करना है? Between two finger and one thumb. Push it. पुश करना है हमें पिन को. ओके. And push it. So our first line is done. Our first line is done. Now second line. Take a push pin and push it. Take another pin and push it. Take another pin and push it. So पेरेंट्स, ये एक्टिविटी है फाइन मोटर स्किल के बेस पर. आप देख सकते हो कि मैं कैसे पिन को पुश कर रही हूँ. तो आपके बच्चों को हैंड्स में प्रेशर लगेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे प्रेशर के साथ कर रही हूँ. तो इससे आपके बच्चों की पाम में स्मॉल मसल्स में डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगी. राइट. पुश इट. और उनको पता चलेगा कि कहाँ से कितना प्रेशर हमें देना है. ओके किड्स, तो अवर सेकेंड लाइन इज ऑल्सो done. So now you see our second line is also done. Now take a third line.
push it. Push it. सो आपको लग रहा है कि ये लाइन कहाँ जा रही है? ये लाइन राइट साइड जा रही है, राइट? तो ये कौन सी लाइन है आपको पता है? स्लैंट लाइन। कौन सी लाइन? स्लैंटिंग लाइन। कौन सी लाइन? स्लैंटिंग लाइन। So our third line is also done. So आपने देखा slanting line, slanting line, slanting line, जो राइट साइड जा रही है slanting line. So kids, what did we learn in few days? What did we learn? बोलो. Yes, we learned standing line, we learned standing line and sleeping line, right? हमने स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन सीखी थी ना. तो स्टैंडिंग लाइन मतलब टॉप टू बॉटम. स्टैंडिंग लाइन मीन्स टॉप टू बॉटम एंड स्लीपिंग लाइन मीन्स लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट. So now we do this activity on standing line. So shall we start? Let's go. First of all, take a one push pin. We hold like this and push it. Push it. Which line is this? Which line is this? Standing line. Which line is this? Standing line. So our standing line is done. And now it's done to sleeping line. Let's go. First of all, left to right, left to right. Left to right. How we hold the push pin? We hold like this and we push it in the board. Push it. So our sleeping line is done. Left to right. Sleeping line. Left to right. Sleeping line. Top to bottom. Standing line. Top to bottom. Standing line. And now right side we go slanting line, right side we go slanting line. तो आपको मेरे साथ बोलना है, ओके? Slanting line,
slanting line, slanting line, standing line, standing line, sleeping line. सो अभी हमारी एक्टिविटी थी. अभी हमें क्या करना है? टेक आउट ऑल पुश पिन फ्रॉम द बोर्ड. हमें क्या करना है? सारे पुश पिन को निकालना है. कैसे? वी होल्ड लाइक दिस एंड पुल इट. हमें खींचना है, पुल इट. तो देखा आपने, एक एक्टिविटी से हमने कितना ज्यादा सीखा. फर्स्ट तो हमने पुश करना सीखा एंड देन वी पुल इट. होल्ड लाइक दिस एंड पुल इट. पुल इट मतलब खींचो. स्लोली स्लोली करनी है हमें एक्टिविटी. We pull it like this. We take out all the push pin from board. And our activity is done. Hope you like it. So kids, what did we learn yesterday? So quick recall, okay? So this is our worksheet. This is our English worksheet. So हमने कल क्या किया था? What did we learn yesterday? We learned sleeping line. We learned sleeping line. Let's paint the car with the color from the bucket by tracing the sleeping line. मतलब हमने क्या किया था? Let's paint the car. बकेट में से कार को कलर किया था. कैसे? By tracing the sleeping line. Left to right, sleeping line. And then trace the sleeping line था हमारा होमवर्क. होप आप सबने होमवर्क किया हो, है ना? आप लोगों ने तो किया ही होगा, राइट? तो आप लोगों ने होमवर्क किया तो मैं आपको यहाँ पे स्माइली दूंगी. सो ये था हमारा कल का क्लास वर्क. एंड नाउ टुडे क्लास वर्क इज ऑन टेक्स्ट बुक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर टेक्स्ट बुक. So this is our English textbook. This is our English textbook. Now take out page number 3. Take out page number 3. Right slanting line. Right slanting line. चलो मेरे पीछे बोलो. Right slanting lines. The sleepy snoggies are too slow. The sleepy snoggies. There are snoggies. There are sleepy snoggies are too slow to catch the olive. Are too slow to catch the olive. आप देख रहे हो पिक्चर में. There are sleepy snoggies or Olaf. Who is he? He is Olaf. There are sleepy snoggies are too slow to catch the Olaf. Sleepy snoggies Olaf को पहुंचने में बहुत दूर है. तो हमें क्या करना है? Trace the right slant line. Trace the right slant line and catch to Olaf. The sleepy snoggies are too slow to catch the Olaf. Trace the right slant line and help it. हमें क्या करना है? स्नोगीज को ओलफ के पास पहुंचाना है. ओके, सो नाउ वी डू इट ऑन बोर्ड. सो शैल वी स्टार्ट? सो
what we do first? Are you all happy today? So what did we do first? First, are you all happy today? So make a smiley. Happy. So now we start our class work. First, what we do? We trace the line. We trace the slanting line. We trace slanting line. So how we trace? We trace slowly, slowly. Trace. Slanting line. आपको मेरे साथ बोलना है. Slanting line. 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 So our class work is done and हमने स्लोगिस को अलग के पास पहुंचा दिया. Okay. So here I use chalk, but you use crayons. How we hold crayons? We hold crayons like this. We hold crayons like this and we trace slowly. So our class work is done. Which line we learn today? We learn right side slanting line, right side slanting line, right side slanting line, right side slanting line, right side slanting line. So our class work is done. So now rhymes time. So which lines we learned yesterday? हमने कौन सी लाइन सीखी थी? Rain on a green grass. Rhymes number 7, page number 8. Take out rhymes book. Take out rhymes book, page number 8. So, rain on the green grass. मेरे पीछे आपको बोलना है, ओके? Rain on the green grass. Rain on the tree. Rain on the housetop, but not on me. अभी मेरे साथ में, ओके? Rain on the green grass. Rain on the tree. Rain on the green grass. Rain on the tree. Rain on the housetop, but not on me. Rain on the housetop, but not on me. Now we do it with action. So, first of all, ready?